today we will start exercise 4.4 of grade 7. So question first is that set up equation and solve them to find the unknown numbers in the following cases. Means some statements are given to us. So first of all, by using those statements we will be writing the equations. यानी कि जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम पहले इक्वेशन को लिखेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन पार्ट. अननोन पार्ट मीन्स वेरिएबल, यानी फिर उसके बाद हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेटमेंट. दिस इज दैट ऐड 4 to 8 times a number. यानी ऐड 4 to 8 times a number, but as we all know that we don't know the number, so let's let the number बी एक्स, यानी जो अननोन नंबर है मैंने उसको सपोज कर लिया है x. नाउ इट्स गिवन हियर दैट ऐड 4 to 8 times a number, यानी कि 4 ऐड करना है 8 times a number, लेकिन वो नंबर क्या है x, यानी मैंने 4 ऐड किया किसमें 8 times a number, यानी कि इस नंबर के 8 times में तो क्या हो जाएगा 8x gives you get 60, यानी हमें क्या मिलता है 60. दैट मीन्स 60 इज द रिजल्ट. Okay, so this is the required equation. Okay, you can also interchange these two values. इन दोनों को हम interchange भी कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 8x plus 4 is equals to 60. Both are correct. Then after, so this is the required equation. Now we have to find out the value of this variable. यानी हमें x की वैल्यू और फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को उधर भेज देंगे. यानी ये तो हमारी इक्वेशन हो गई. Now we will have 8x is equals to 60 and plus 4 will come here, it will come minus 4. Then 8x is equals to 60 minus 4, we will have 56. Then x is equals to 56 upon 8, 8 one time, 8 7 times, and x is equals to 7. So this is the value of unknown part, that means value of variable. Similarly, I am telling it's one more part, b part of this. This is that 1/5 of a number. So once again you will write that let the number be y. This time the variable or the unknown part I have taken here y. यानी unknown part हम कुछ भी ले सकते हैं, a b c d p q any value. Okay, so here I have taken x और यहाँ मैंने ले लिया है y. So this is that 1/5 of a number minus 4, यानी कि 1/5 of a number यानी कि 1/5 of y minus 4 gives 3. That means 3 is the result. So once again we will solve it. Okay, so this is the equation. We can write this in this form, or we can also write like that y minus, यानी इस 5 को यहाँ से अगर हटाना है तो बस इस वैल्यू को छोड़ के सबसे मल्टीप्लाई कर देना है. तो यहाँ पर इसको हमने छोड़ दिया ऐसे ही, ये हो जाएगा 4 5 times 20 और ये हो जाएगा 5 3 times 50. Okay, then after y is equals to 15, as it is, minus 20 will come here, it will become plus 20, and y is equals to 20 plus 15, that means 35. So this is the value of variable, that means unknown value. So this was the question number 1. Next is question number 2. Now question 2 is first part. Question 2 first part. This is that the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in a class are twice the lowest marks plus 7. यानी जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, टीचर ने बताया कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं पूरी क्लास में से किसी स्टूडेंट के, वो क्या है, आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, यानी कि लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस प्लस 7, यानी कि उसने जो हाईएस्ट मार्क्स हैं उसे कंपेयर किया है लोएस्ट मार्क्स से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज बी, लेकिन हमें लोएस्ट मार्क्स तो पता नहीं. सो फर्स्ट ऑफ वी विल सपोज लेट द लोएस्ट मार्क्स बी x, यानी आप y c a p कुछ भी ले सकते थे, तो मैंने यहाँ पर x ले लिया कि लेट द लोएस्ट मार्क्स बी x, यानी आपको समझ आ रहा होगा या नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ. So let the lowest marks be x. So अब ये lowest marks यानी कि twice the lowest marks plus 7, यानी कि इसका twice, ये lowest marks है तो इसका twice the lowest marks plus 7, ये equal किसके हैं, highest marks के, highest marks. Okay, but the highest score is 87, लेकिन ये highest score मुझे कितना दिया हुआ है 87, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x plus 7 is equals to 87. So this is the required equation. ये तो हो गई हमारी equation.
Okay, now we will be solving the unknown part. That means 2x is equals to 87 ये प्लस 7 इधर आके हो जाएगा -7 and then after 2x is equals to 87 minus 7 you will be getting 80 and x is equals to 80 upon 2 that means x is equals to 40. x is 40 that means the unknown value that means x ये जो लोएस्ट मार्क्स हमने सपोज किए थे x वो कितने हैं 40 है. So question was asking the same that what is the lowest score, so that is 40. So you can write here 40 marks. So this is the lowest score. Similarly the next part of this, that means B part. So I am erasing it. Now the B part of this question is that in an isosceles triangle the base angles are equal. So first of all let me draw a triangle. So this is a triangle which is isosceles. So isosceles means whose any two angles are equal. यानी इस triangle की जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ये A है, ये B है और ये C है, तो इस triangle के कोई भी two angles कैसे होंगे equal होंगे. So what is given here that the base angles are equal. यानी कि ये दोनों आपके base angles हैं. These two are your base angles and this is your vertex angle. So base angle जो है वो equal है. तो मैं लिख लेता हूँ कि let the base angles, let each base angle be x. यानी मैंने लिख दिया है कि जो each base angle यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल ये दोनों में क्या है आपके x और x, because it is given in the question that these two are equal. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों कैसे हैं, ये इक्वल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया let the each base angle be x. Then after the vertex angle is 40 degree. ये हमारा vertex angle है. This angle is vertex angle which is given to us 40 degree. So what are the base angles of the triangle? Okay, so we have to find out the base angles of the triangle. यानी हमें ये दो एंगल की वैल्यूज फाइंड करनी है. So children, as we all know that the sum of all three angles of a triangle is always 180 degree. That means that angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Okay, this is angle sum property of a triangle. We all know very well. So let's put the values of this. So angle A is 40. This is x. This is also x, which is equals to 180. So x plus x will become 2x, and this 40 will send to RHS. So 180 as it is, and plus 40 will become here minus 40. Then after we can write here that 2x is equals to 180 minus 40, that means 140, and x is equals to 140 and 2 will come in denominator. So 2 one time and 2 70 times. So that means x is equals to 70 degree. That means these two angles are 70 degree each. ये भी 70 है और ये भी 70 degree है. So I hope you all would have understood the question number 1 and 2. Next questions we will discuss in our next video. So I hope you all would have understood question 1 and 2. So at last I would like to say thanks for watching it.